Namaskar students, welcome again to our online classes. Today I am starting chapter number 2 from Geography, class 8. In first chapter we have discussed about the resources. What are resources? What are the uses of resources? What are the types of resources? So mostly we have study about the three types of resources: natural resources, human-made resources, and last was human itself. Now, before starting this chapter, I will explain that first chapter is related to the rest of your geography chapter. Now, in this chapter, we are studying about the land, soil, water, natural resource, natural vegetation, and wildlife resources. These all are come in the natural resource. So, what we are going to study in this chapter about the natural resource. I think you are getting my point. Now, we start chapter number 2: land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. So let's start. So first topic of the chapter is land. So we are starting the chapter with the topic land. What is land? What is the uses of land? How can we conserve it? All things we will discuss in this topic. So first topic is land. It is the most important natural resource. सबसे important resource अगर natural resource में वो क्या है? लैंड, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, सारी चीजें प्रोडक्शन का वर्क कहाँ पर होता है? लैंड पर। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? लैंड पर। रेजिडेंशियल एरिया कहाँ होता है? लैंड पर। So it means land is the most important natural resource. It covers about 30% of total area of Earth's surface. हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, ये जो हमारी अर्थ है उसकी 1/3 पार्ट है, 3/4 पार्ट है, किसे कवर है? वाटर से। अब बचा कितना है? 30%, यानी कि अबाउट 70% जो पार्ट है लैंड का वो किससे कवर है? वाटर से। और यहाँ पे measuring about it covers about 30% of the total area of Earth surface. यानी अर्थ की टोटल अगर पूरी अर्थ की बात करते हैं तो जो लैंड है वो कितना परसेंट है? 30%. Population is unevenly distributed due to the various characteristics. About 30% पार्ट पर लैंड है, तो पूरे 30% पार्ट पर हम रहते हैं? नो. अब पॉपुलेशन जो है इट वाज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. मैं छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. राजस्थान जो स्टेट इन which हम रहते हैं, इट इज द मोस्ट this Rajasthan is the area wise is the first state of India. According to India, Rajasthan is the largest state. But if we are talking about the population, UP, Uttar Pradesh, is the most populous state of India. और यहाँ पे आ गया unevenly distributed, यानी कि population कहाँ पर होगी? ये उस चीज पर डिपेंड करेगा कि जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें लैंड मास आते हैं, डेजर्ट है, प्लेन्स है, रिवर्स है, माउंटेन है, उस लैंड पर किस फिजिकल फीचर्स की ज्यादा क्वांटिटी है, यानी जहां पर फिजिकल फीचर जितना फेवरेबल होंगे उतने ही लोग वहां पर रहेंगे. सो पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी पॉपुलेशन जो है उस पर डिपेंड करेगी कि उस लैंड का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड विशेषता क्या है. नाउ इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. माउंटेन्स
स्लोप्स, माउंटेन होते हैं, हिल्स जो होती बड़ी बड़ी, स्लोप्स होती ढलान, डेजर्ट सबको पता है रेगिस्तान को कहते हैं डेजर्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया जहाँ बहुत जंगल होते हैं, आर स्पेशली पॉपुलेटेड, जहाँ पर भी ये लैंडमार्क्स पाए जाते हैं, फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं लैंड के, वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है, क्योंकि देयर आर not favorable conditions to the people, and plains, rivers valley and densely populated, जो एरिया जहाँ पर प्लेन्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा हो पाती है। यहाँ पर माउंटेन्स एरिया की जो लाइफ होती है, पीपल जो यहाँ पर रहते हैं उनकी लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और प्लेन्स एंड रिवर्स वैली आर द डेंसली पॉपुलेटेड। हमने राजस्थान का एग्जाम्पल किया था, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, बट यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, ठीक है, डेजर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, कम रहते हैं, वाटर की स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा है। यूपी की बात करते हैं, यूपी में रिवर्स, गंगा रिवर, सैलपुर रिवर एरिया, यहाँ पे कोई डेंसली पॉपुलेटेड है। नाउ अगेन अबाउट द लैंड, it is most important natural resource. It covers about 30% of total area of the earth's surface. Population is unevenly distributed due to the various characteristics: mountain slopes, desert area, forest area, steadily populated, population कम होती है, and plains, rivers, valley are densely populated. In areas में population बहुत ज़्यादा रहती है. Now we will study about the land use. So student, in first topic we have studied about the land. What is land? The 30% of the earth surface covered with land, and it is the most important natural resources. And we also study that the unevenly distribution of the population on the land. Now next point of the chapter is land use. First we have studied land. Now second we are going to study land use. Land की क्या यूज है, तो आप सबको पता है land की क्या यूज है. Land is used for various purposes such as agriculture, mining, building houses, etc. Mostly we use our land for agriculture. Mostly agriculture जो है के लिए land का यूज किया जाता है. Agriculture से प्रोडक्शन होता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल है. Now second is mining. Minerals. Know about the minerals? All minerals are found under the earth's surface. So it means land is also used for mining. Mining is the process in which we extract the minerals. Fine. Agriculture, mining and building houses. Houses can be built, all buildings are built on the earth. So main uses of the agriculture, mining and building houses. Next is land use depend on the topography. Now what is the topography? Topography means situation of the land या फिर formation of the land किस तरह से बना हुआ है land. Soil, वहाँ की soil कैसी है, topography में सब चीज है. Soil कैसी है, वहाँ की fertile है, unfertile है. Soil के बहुत सारे kinds होते हैं. We have studied the science also. Climate कि उस land की जहाँ पर land है उस एरिया का climate कैसा है. And minerals कि वहाँ पर minerals कितने हैं, ज़्यादा है, क्योंकि देखिए land का economical value होता है तब जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा mineral हो. Fine. तो minerals, climate, soil, topography सारी चीजें डिपेंड करती है कि उस लैंड का यूज कितना है. Now next is land can be classified on the basis of ownership. अब हम लैंड के यहाँ पे ownership जो है, ownership का मतलब समझते हैं, ये किसका है, उस बेसिस पर हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है. Fine. एक है प्राइवेट लैंड और दूसरा है कम्युनिटी लैंड. फर्स्ट इज प्राइवेट लैंड. प्राइवेट लैंड जैसे हमारा खुद का हाउस है, वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. फाइन.
सॉइल इरोजन को ले लीजिए, जैसे ज्यादा रेनफॉल होगी, फ्लड आ गई, ऐसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज फर्टाइल व्हेन इट वाज ड्रेन, जब वो ड्रेन हो जाती है, अब चाहे वो फ्लड से हो चाहे वो एक्सेस रेन से हो, तो सॉइल इरोजन होता है जिससे वहां की फर्टाइलिटी कम हो जाती है। उसके बाद डिजर्टिफिकेशन, कई एरिया में डिजर्ट होते हैं, वाटर स्कैर्सिटी होती है, क्रॉप्स वहां पर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है। आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, ये हमारे लिए लैंड के लिए बहुत ज्यादा और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत थ्रेट है। ये चीजें होती है जो किसी अच्छे लैंड को भी क्या बना देती है, अनफर्टाइल बना देती है, उसकी यूज पर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द लैंड यूज, land is used for various purposes such as agriculture, mining, building houses, etc. Land use depend on the topography, soil, climate and mineral. Land can be classified on the basis of the ownership, private land and community land. Land degradation, soil erosion, desertification are the major threat to the environment. So student, after the explaining the use of land, what are the uses of land, and also we have studied about the land. Now our third topic is conservation of the land resources. So there are 4 ways I have written on the board. The first is afforestation. Afforestation means growing more and more trees so that we can conserve the resources, especially land resources. If we grow more and more plants, so we can fertilize the land. Next is land reclamation, की लैंड की क्वालिटी को बनाए रखना। अगर वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो उसको मेंटेन करके रखना, उसकी केयर करना। थर्ड इज द रेगुलेटिंग यूज ऑफ द केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। बहुत ज्यादा एक्सेस यूज होता है किसका, केमिकल पेस्टिसाइड्स होती है, दवाइयां छिड़की जाती है क्रॉप्स में जिससे लैंड में चली जाती है और कहीं ना कहीं वो लैंड को क्या कर देती है, अनफर्टाइल। फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना। एंड फोर्थ इज द चेकिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग जो एनिमल्स जो कई बार ऐसी स्पीसीज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कई बार वो एनिमल जो है ओवरग्रेजिंग कर देते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ग्रो होने से पहले क्या हो जाती है, उसको भी चेक करते हैं। Now conserving land resources, after I will explain some important fact. Do you know that 90% of the world population occupy only 30% of the land area? यानी अगर हमने अभी स्टार्टिंग किया था कि 30% में क्या है, लैंड एंड 70% में क्या है, वाटर। फाइन, अब ये जो लैंड है, ठीक है, यानी इसका 90% of the world population occupy only 30%, इसमें से किसी 30% लैंड ऐसा है इसमें से जिस पर लोग क्या रहते हैं, यानी कि 90% of the world population occupy only 30% of the land area, and the remaining 70% of the land, जो remaining है, जो बचा हुआ land है, कितना हुआ, 30%, 90% population, 70% में either steady populated या तो वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं और uninhabited, यानी कि या तो वहां पर कोई रहता ही नहीं है। तो जो भी लैंड हमारे पास है, फर्टाइल है, जहाँ पे क्रॉप्स होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो इट्स वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द लैंड एंड ऑल्सो वी शुड केयर ऑफ द लैंड बिकॉज लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। So in this topic we will study land, what is land and what is
explanation. Thank you.